All right, sir. Good evening and a very warm welcome to everyone joining us today. I am Research Associate Rabia Anwaar at the Center for Law and Security, and on behalf of the center, I am pleased to host this discussion today. And the topic of today's discussion will be escalating tensions along Afghanistan and Pakistan border, a development that has reignited old tensions and mistrust between Islamabad and Kabul. And to discuss with this very pertinent subject matter, we have with us two very distinguished speakers. Major General retired Muhammad Samrez Salek, a seasoned defense and security analyst, and the other distinguished speaker is Dr. Aarish Khan, senior research analyst, having expertise in Afghanistan affairs and regional security. And we are also joined by the executive director, Mr. Rehman Azhar. I thank all of you for joining us here today. So let's quickly begin the session, sir. My first question will be from you, sir, Sir Samrez Salek. Sir, how do the recent border tensions have reflected the growing mistrust between Islamabad and Kabul? And what do you think? What are the specific security concerns of Pakistan that triggered the recent military operation in Afghanistan? Rabia, thank you very much. Rehman, thank you very much for inviting me. I will first like to talk a bit about the history. Once the US came to Afghanistan to carry out Operation Enduring Freedom, at that time, President of Pakistan, General Pervez Musharraf, demanded from the US that Northern Alliance should not come to Kabul mounting US tanks. So this was an expectation from Pakistan because historically Northern Alliance has been an Indian ally. So in my view, the US had no choice but to be on the side of somebody who was enemy of Taliban. So Northern Alliance did come to Kabul mounting US tanks. And I used to say that the day Northern Alliance came to Kabul, mounting US tanks, same day, India moved to Afghanistan. And India enjoyed a heyday till the time the US was present in Afghanistan. Now, even at the time of US presence, there has been terrorism coming to Pakistan from Afghanistan. Rather, I would say that I've written in my book, I had called US as inimical ally because US conducted its operations in Afghanistan in a way that terrorists, they get flushed inside Afghanistan. And after commencement of their operations, within 2 months, there was an attack on Indian Parliament, which everybody knows was a false flag operation. And the objective was that Pakistan military is forced to shift from western border to the eastern border. And that did happen. So there was a vacuum on the western border. So again, it provided an opportunity for the terrorists to come to Pakistan. Now, we lived with these conditions as long as the US was there. And after US withdrawal from Afghanistan, there has been a sudden fill-up in terrorism in Pakistan. So TTP has been enjoying safe havens in Afghanistan. And for that reason, they were using Afghani soil and conducting operations inside Pakistan. Although I know that a couple of months ago, one of the leaders of Afghanistan had given a decree that carrying out operations against Pakistan is not justified from religious point of view. However, we have seen that all along there has been terrorism being conducted in Pakistan, and the terrorists were coming from Afghanistan. So coming to your question, the main concern that Pakistan had was right from day one that even in the presence of US, Pakistan demanded that there should be sufficient control of the powers in Afghanistan to control that there is no use of Afghani soil for terrorism against Pakistan. Now, after US withdrawal, Pakistan and Afghanistan relations have not been very cordial. We know that we have yet to recognize them, the Taliban government. We know that we pushed back Muhajirin
the refugees back to Afghanistan. We know that we conducted raids on Afghanistan against the terrorists, very terrorists who were conducting operations in Pakistan. So for that reason, we have not had very cordial relations with Afghanistan. अच्छा So that has further compounded the issue, and we are Gotcha. facing terrorism in Pakistan. That is the main concern that Pakistan has. राइट And second concern, I would say, is the जी way. Ji, जी जी you आप want to say जरा सा बात something? पूरी कर लीजिए मैं फिर उसके बाद पूछता हूँ सवाल जी मैं second concern जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, that is Afghan India nexus. ठीक है Since India had enjoyed a heyday in Afghanistan, so we know that हाँ Indians have been conducting targeted killings inside Pakistan through their elements they had nurtured in Afghanistan since the last 2 decades. बिल्कुल ठीक राइट मैं जरा आरिश साहब अगर साथ हैं तो आई थिंक आई विल डायरेक्ट दिस क्वेश्चन टू हिम आरिश साहब आर यू हियर विद अस जी जी आपका माइक मेरा ख्याल है म्यूट है लेकिन Yeah. देखिए अगर हम इस सारे क्वेश्चन को इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें हमारा मेन मकसद है कि यहाँ पर जो हमारी अफवाज पर सिविलियन पर अटैक्स हो रहे हैं उनको रोका जाए और हमें लगता है कि ये कनेक्शन जो है वो अफगानिस्तान से है अफगानिस्तान को हम कह चुके हैं लेकिन अफगानिस्तान बात नहीं सुनता या वो उनको सपोर्ट देते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं वन इज के बात करें और बातचीत ही चलती रहे या दूसरा है कि यूज ऑफ फोर्स करें आई नो देयर इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स जहां पर बातचीत भी होती है ताकत का इस्तेमाल भी होता है यूज ऑफ फोर्स भी होता है बट व्हाई डू यू थिंक कि इस वक्त हमें यूज ऑफ फोर्स वाली ऑप्शन पर ज्यादा रिलाय करना पड़ रहा है रादर देन निगोशिएशंस या वो बातचीत वाली ऑप्शन के ऊपर देखिए, if you look at Pakistan's response to the terrorism emanating out of Afghanistan, I think there is one word that characterizes Pakistan's response to terrorism out of Afghanistan, and that is restraint. I think we have shown a lot of restraint when it comes to terrorism coming out of Afghanistan. It's been 4 years, and if you compare the casualty figures of terrorist attacks, the numbers of terrorist attacks, the casualty figures from terrorist attacks, they're exorbitantly high. I don't think any country gives the sort of restrained response in the face of such an onslaught of terrorism the way Pakistan has done it. So I think there is one thing that we need to be absolutely clear about, that Pakistan has shown commendable restraint when it comes to Afghanistan and terrorism coming out of Afghanistan. So what we have done in the past 4 years is that we have tried to exhaust all other options that we could have used. For instance, we have given diplomacy a chance. Our highest diplomats have traveled to Afghanistan. Our defense minister has traveled to Afghanistan. Our हर interior लेवल minister पर has traveled. एंगेजमेंट हुई है आई बिलीव और एंगेजमेंट हमारी, हमने चाइना को मिला के भी उनके साथ एंगेजमेंट करने की कोशिश की है. एंड एज यू सेड कि इट इज नॉट वन और द अदर. इट्स नॉट कि आप या काइनेटिक फोर्स इस्तेमाल करेंगे या आप डिप्लोमेसी करेंगे. It has to be a combination of the two. And to my understanding, what has gone wrong with the diplomacy approach is that our diplomacy became an end in itself. Like, we weren't gearing the diplomacy towards achieving certain objectives. So we were just having the highest level interactions with the Afghan counterparts, but we weren't seeing a lot of results on the ground. अच्छा To my understanding, the reason why that was the case was that Pakistan's threat of the use of kinetic force was not credible enough. Afghans did not think that we could respond in a way that would make them change their course. So they thought that they could dilly-dally and they could continue on with that diplomatic engagement for nothing and no result would come out of it. And Pakistan would not hold them to account. I think राइट in the past week or so, we have demonstrated it to them that it would not be the case. And I think it is one of the ways in which we could have demonstrated to them that our threat is credible. If you would not stop terrorists coming from Afghanistan to Pakistan and attacking Pakistani security forces and civilian population, you will have consequences for that. Until now, they weren't sure about it. Right. Now बिल्कुल they are देखिए kind of this is not something that happened within a month or 2 months or this was not just one single incident
that sparked the entire this series of attacks. लेकिन जनरल समरेज साहब, आपने जो इंडिया वाली बात की, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो कि इस सारी डिस्कशन के अंदर कहीं ना कहीं पर आ रहा है कि क्या अफगान तालिबान की चीजें जो है, या जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, उनके पीछे एक तो मोटिव आपको जो है वो क्या नजर आता है, एंड दूसरा ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान was looking at things and realizing that अगर ये चीज हमने अभी इसको ना रोका तो देन यही होता रहेगा कि इंडिया से रिसोर्स जो है वो फ्लाई करता रहेगा, वो टीटीए के थ्रू टीटीपी तक जाता रहेगा, और फिर ये जो प्रॉब्लम जो अभी शायद छोटी प्रॉब्लम है, अभी शायद लेसर इवल है, ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है वो पाकिस्तान के साथ बन जाएगा, बिकॉज इंडिया इज कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग इन टीटीपी, और जो ग्रुप्स वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं वहां से। थैंक यू वेरी मच रहमान। इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन पे आऊं, मैं एक बहुत ऑथेंटिकेटेड सोर्स को कोट करते हुए कुछ आपको डाटा देना चाहूंगा जी। कि 2021 से लेके आज तक 200 फ्लैग मीटिंग्स हुई हैं विद द करस्पॉन्डिंग ये जो है अफगान फोर्सेस जो कि ऑन बॉर्डर पे मौजूद हैं। 10 दफा ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है। 800 दफा 800 टाइम्स रिकॉर्डेड प्रोटेस्ट दी गई हैं। 200 टाइम्स आईएसआई के मेमोज दिए गए हैं। 180 टाइम्स डिमार्च किया गया है। 3 दफा चाइना जो है वो दोनों मुल्कों को लेके बैठा कि आप लोग अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें। 150 अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अक्रॉस इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी ऑन द बॉर्डर, और 3800 हमने लाइव्स लूज की हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 2025 is the second worst year that we have experienced so far. It was in 2009. 2009 was the worst in terms of casualties. And if I correctly remember, the figure was something like closer to 1,000 or above 1,000. Or 2025 May, we are almost close to that figure. So we are slightly short of that figure. I pray that next 2 months are peaceful of this year, but 2025 has been the second worst. Right. अब देखिए इशू ये जो आपका क्वेश्चन है इंडिया का जो इन्फ्लुएंस होना अफगानिस्तान में, ये हमें पता है। पहली तो बात यह कि अफगानिस्तान थ्रू आउट पाकिस्तान के साथ उनके कोई बहुत ज्यादा अच्छे जज्बात नहीं रहे। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, जो पाकिस्तान ने जब यूएन मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया तो अफगानिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने उसको अपोज किया। नाउ एक तरफ तो इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट है विच इज बेस्ड ऑन चाणक्य डॉक्ट्रिन कि नेबर इज एनिमी एंड नेबर ऑफ राइट योर फ्रेंड। जी। सो फ्रॉम दैट particularly जब से यूएस आया अफगानिस्तान में, नॉर्दर्न अलायंस केम टू पावर इन अफगानिस्तान, तो तब से इंडिया को बहुत ज्यादा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। आई रिमेम्बर 2008-9 जब हम लोग यूएस में जाते थे विद पार्ट ऑफ डेलीगेशन, वी ऑलवेज मेंशन कि देयर आर 8 consulates of India along Pak-Afghan border which are meant for nothing but carrying out terrorism in Pakistan. हमारी तरफ अगर 800 के करीब थी और दूसरी तरफ दे वर नॉट इवन 120 और समथिंग लाइक दैट पोस्ट, सो एडिक्वेट रिस्पांस नहीं था दूसरी तरफ। राइट। तो ऐसे फील होता था कि एज इफ वन दे लैक कैपेबिलिटी, जन साहब के मेरे ख्याल में कुछ कनेक्शन का इशू है जी। और अजहर मैं आपको एक और करवाता हूं कि यूएस भी जी जी अभी अभी आ रही है दरम्यान में, बट जो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहा था, बट नाउ यू कैन स्पीक, आई थिंक वी कैन हियर यू। जी अच्छा जन साहब, थोड़ा सा मेरा ख्याल है लेट अस रिकनेक्ट टू यू। ऑल द मोटिवेशन जी, लेट अस रिकनेक्ट टू यू।
मैं आरिश, आई वांट योर टेक, आरिश साहब, ऑन योर टेक ऑन दिस। ये जो इंडिया वाला कनेक्शन है, एंड ऑल्सो द आइडियोलॉजिकल, इसकी जो डेरावेशन है वो कहाँ से है? बिकॉज देखिए, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो कश्मीर में जो कुछ कर रहा है, प्लस जो इसराइल और गजा वाले मामले के अंदर जो है वो उनका जो किरदार है। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान की जो लीडरशिप है, जो टीटीए की लीडरशिप है, वो इस सब से हटकर सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान पे फोकस करके ना सिर्फ वहां जाते हैं, कश्मीर के इशू के ऊपर जो है वो इंडियन स्टांस को जो है वो उसको एंडोर्स जो है वो करते हैं। और दूसरा ये कि उसके अलावा वहां पर जो उनकी मुलाकातें हुई हैं वो भी हम सबके सामने। हाउ डू यू सी दिस? क्या ये फैक्टर जो है वो तालिबान की जो लीडरशिप है, जो कि बहुत ज्यादा जोर देती है कि आइडियोलॉजिकली हम जो है वो इस पर जो है वो फोकस करते हैं, डू यू थिंक वहां पर कहीं पर जो है वो इसका कुछ असर है, कुछ सिग्निफिकेंस इसकी है? देखिए, as you mentioned that the relationship between the current Indian government and the Taliban regime is very unnatural. हम्म। एक तरफ एक हिंदू नेशनलिस्ट, हिंदू फैशिस्ट गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ एक इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो जो बाय फोर्स इन पावर आया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, देर इज नो अदर कॉमन फैक्टर बिटवीन देम अदर देन एडवर्सेरियल रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एज ऑफ नाउ। एग्जैक्टली। ठीक है, इंडिया का तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन अफगानिस्तान का फॉर द मोमेंट वी आर सीइंग के हमारी रिलेशनशिप बहुत एडवर्सेरियल हुई हुई है। सो आई थिंक दैट इज द ओनली common denominator that the two countries have. And I was really, it was quite ironic to see that when Muttaqi was invited to Darul Uloom Deoband, and hundreds of thousands of Muslims, which the Indian government readily labels as terrorists and pro-Pakistan on a moment's notice, all of them thronged to greet the representative of an extremist group that is in power, and हम्म। the Indian government was facilitating it. So it was almost comical to see. So as हम्म। you said, that there is no complementarity between the two countries. और किसी ने मुझे कहा कि अफगान हुकूमत समझती है कि उनको सारे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, हाँ। और वो तो सब ममालिक के साथ बैलेंस रिलेशंस रखना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि अफगानिस्तान हुकूमत का जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है और जो उनका हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक है, वो एक जैसा नहीं है। अब फॉर इंस्टेंस, अगर पाकिस्तान किसी ऐसे मुल्क के साथ रब्ता रखना चाहेगा कि जिसके चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो हाँ। चूंकि हम अपने चाइना के साथ ताल्लुकात को बहुत ज्यादा फोकियत देते हैं, ठीक है, राइट। तो हम किसी दूसरे ऐसे मुल्क के साथ अचानक ऐसे ही एंगेज करना नहीं शुरू कर देंगे विदाउट टेकिंग चाइनीज इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर दैट, because हम्म। we would know our friends' sensitivities about that particular country. राइट। Now, Pakistan has been very supportive of Afghanistan all these years. We have hosted over 4 million Afghan refugees over the हम्म। years. And besides that, we have historical, cultural, ethnic connections with Afghanistan, economic connections with Afghanistan. So, if Afghanistan gave as much importance to its relationship with Pakistan, हम्म। it wouldn't have just gone behind Pakistan's back and would have tried to establish relations with a country like India. Like, India is not any other country for Afghanistan to have good relations with. It is राइट। a country that Pakistan is having very hostile relationship with. So राइट। if अच्छा, sorry, मैं वेरी क्विकली जरा थोड़ा सा इस बहस को अब समेटते हैं। जनरल साहब, वे फॉरवर्ड, एक इम्प्रेशन ये है कि तालिबान के पास उनकी वॉर इकोनॉमी है, उनका पूरा सिस्टम जो है वो अफगानिस्तान का जो है वो इस चीज के ऊपर चलता है कि आप फाइटर्स बनाकर जो है वो भेजते रहें। तो ये उनसे ज्यादा बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए है। हाउ डू यू सी दिस? जी, आपका माइक जनरल साहब जरा म्यूट है, इसको अनम्यूट कर लीजिए। जी। ओके, सॉरी। जी। ओके, फाइन। मैं दो तीन चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। एक हम्म। तरफ तो यह है कि पाकिस्तान के एंड को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है दैट इज लिंक टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम्म। That is something which provides an opportunity to Pakistan to transit from a security state to a economic state.
तो ठीक है। जब तक हमारे इर्द गिर्द हालात ठीक नहीं होंगे तब तक शायद हम सी पैक को ऑप्टिमली उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट ना कर सकें। चाइना ने जब BRI को लेआउट किया है तो उन्होंने अपने 14 नेबर्स के साथ पहले अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया है, बिकॉज दे न्यू कि विदाउट रेजोल्यूशन ऑफ दोज डिस्प्यूट्स ये इस तरह के इनिशिएटिव वो नहीं अनफोल्ड कर सकेंगे। सेम वे हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे जो सराउंडिंग नेबर्स हैं उनके साथ एटलीस्ट जी। अफगानिस्तान के साथ अलगाव बेहतर हो। नाउ टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान इटसेल्फ, अफगानिस्तान में जो है हमने देख लिया है कि इट इज नोन टू बी द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, लेकिन उस प्रोसेस में अफगानिस्तान खुद एक ग्रेवयार्ड बन गया। तो मैं ये कहता हूं कि अगर दुनिया में ये पूरी तरीके से प्रूव हो चुका है कि फाइटिंग इज नॉट द सोल्यूशन, फाइट द स्ट्रेटजी ऑफ फाइटिंग हैजंट सक्सीडेड, ना ये अलेक्जेंडर के टाइम पे सक्सीड, ना ये सोवियत यूनियन के टाइम पे सक्सीड हुई, ना ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे सक्सीड हुई, ना यूएस के टाइम पे सक्सीड हुई। सो फ्यूचर में भी ये जो स्ट्रेटेजी ऑफ फाइटिंग है इट इज नॉट गोइंग टू यील्ड एनी रिजल्ट्स। ये मसाइल को और बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। राइट। लेकिन जो सो दैट मीन्स कि इट इज हाई टाइम फॉर अस टू थिंक, not only us, all the parts, global parts, कि fighting is not the right solution or right strategy to bring stability in Afghanistan. ठीक है। सोल्यूशन है वो मेरे नजदीक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। मैं जब इसको रिलेट करता हूँ अफगानिस्तान को जापान के साथ, तो जापान की अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मूवीज देखें तो आपको नजर आता है कि दे वर मोर फेरोशियस देन द अफगानीज, द राइट। जापानीज। But what have they brought them from extreme ferocity to extreme, I would say, calmness and tranquility is basically growth and development and good leadership. राइट। उसमें डेफिनेटली एक फैक्टर न्यूक्लियर वेपन का भी था, दैट लग्जरी नोबडी हैज टू यूज, दे डिड सफर दैट ट्रेजेडी। लेकिन ये कि इस वक्त वही कह रहे हैं डिफरेंट मोड। मेरे नजदीक पाकिस्तान की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि देयर शुड बी स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, दैट विल नॉट बी ब्रॉट थ्रू फाइटिंग, दैट विल बी ब्रॉट थ्रू द कंट्रीज जो कि इम्पैक्ट होते हैं इंस्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान से, एंड दोज आर नेमली रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। ये एक बनता है गोल्डन रिंग ऑफ सिक्योरिटी। इन कंट्रीज के साथ हाथ मिलाना चाहिए, इन कंट्रीज की सपोर्ट के साथ थ्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि मुझे देख के खुशी होती है। वेरी रिसेंटली कपल ऑफ मंथ्स अगो वहां पे इस तरह की बातचीत हो रही थी कि वहां पे माइनिंग हो रही है, वहां पे नहर बन रही है, वहां पे रोड्स बन रही हैं। सो द वे व्हिच इज गोइंग टू लीड अस टुवर्ड्स stability in Afghanistan, which is more critical than any time in the past. Right. Very right, sir. Rabia, जी. Sir, I have a last question. Sir, I would like to ask it from you, Sir Aarish. Sir, जो अभी currently ceasefire चल रहा है, 48 hours ceasefire between Afghanistan and Pakistan. Sir, do you believe there are some chances of translating it into some extension, or it will again move to the resumption of war? And given the context of Trump, he is currently sorting out many conflicts, according to him, into peace deals and peace agreements. Sir, could a potential Trump mediation between Afghanistan and Pakistan hold any real promise, or it will further exacerbate the situation in case of Afghanistan and Pakistan, and in the context of US and Taliban relations? Look, first, I don't think that these border clashes between Pakistan and Afghanistan should be seen as war between Pakistan and Afghanistan. I think ISPR has also tried to clarify that position, that it's not a war between the people of Pakistan and Afghanistan. So that is one. Two, I don't think we need any third party involvement right now. We have just used these kinetic measures to facilitate diplomacy between Pakistan and Afghanistan, because we were under the impression that our diplomacy, sans the use of force, was not as effective. So we are now giving diplomacy a chance. Whether these 48 hours, which I think would come to an end 6 p.m. today, whether it would yield any positive result or not, I am not sure. But what it might do is that it might put the diplomacy and the negotiation process on the right track, in which both sides make diplomatic engagements more result oriented,
And what we need to do is that we have been using economic coercion, people to people constraints as a stick against Afghanistan. I think we should flip the discussion on those and we should now use them as carrots. So once we see results on the ground against the TTP, we should allow Afghan transit trade, which is halted right now. We should open borders. We should issue more visas. But all that needs to be conditioned with the Afghan government's actions against the TTP. So that's my recipe. I think the point is simple. The Pakistan does not have a problem with Afghanistan. Pakistan has a problem with the groups that are operating from Pakistan and attacking Pakistan security forces and Pakistani civilians on this side of the border. So, Ji, I think we have run short of time. Yes, sir. Very good. So I would like to conclude and I would like to thank both of the speakers for joining us and for making us understand this issue in a better way. Thank you Thank so you so much. much, General Samrez Saab, Aarish Saab. It was a pleasure having you at this webinar, sir. Thank you for Thank you inviting very us. much. Thank you, So sir. nice of you. So best wishes. Thank you.